Telangana will be going to elections together. So this will be a very level playing field will be there for both the states. And also in the light of this data breach by Chandrababu Naidu, the data stealing case has come up. I think so this is very important that good decision has been taken. On 11th of April, polling would be held. And inshallah, I'm sure people of Telangana would give a 17-0 verdict. 16 for TRS, 1 for MIM. And in Andhra, the people of Andhra would bless Jagan and he'll win more than 21 parliament seats. You've said previously that you will support Jagan in campaigning. Is that still on? Would you be doing that? If and when my friend Jagan Mohan Reddy requires me to come and address or help, I am there for him. But definitely in Telangana, I will, wherever I can go, whatever energy, whatever I have, I will definitely utilize it. My party is behind me, my party members are behind me. We will fully back to ensure that people of Telangana win, because winning 17-0 will be a huge victory for people of Telangana, wherein they will decide who forms the next government. So it is in the interest of people of Telangana that they give this kind of huge mandate for themselves. This will be a victory for people of Telangana if we can achieve that 17-0 result, and I'm sure that 17-0 result would come, and this will be a great benefit to people of Telangana. असद जी हिंदी में जवाब दे, असद जी हिंदी में जवाब दे, हिंदी में जवाब दे सर कि जो चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है, क्या रणनीति आपकी तरफ से? मैं इसका वेलकम करता हूं, क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है, और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिजल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी, और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगन मोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे, और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर आपने पुलवामा हमले को लेकर बोला था कि एक मिनट सर TRS के साथ आप रह के जो निजामाबाद और आदिलाबाद है उसमें जो माइनॉरिटी ज्यादा है उसमें आप एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस में करेंगे? मुझे माइनॉरिटीज हम तो पूरे तेलंगाना की आवाम से कहेंगे, हर तबके की आवाम से कहेंगे कि आपको तेलंगाना को हमको कामयाबी दिलाना है। ये तेलंगाना का इलेक्शन है और 17-0 का रिजल्ट आएगा तो KCR तेलंगाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि KCR जो कह रहे हैं, जो MIM भी तायद करे कि फेडरलिज्म का जो सही माने है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में क्यों रहनी चाहिए, वो स्टेट में रहनी चाहिए और स्टेट को अख्तियार करना चाहिए कैसा उनके पैसों का इस्तेमाल हो। तो ये इंशाल्लाह ये रिजल्ट आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, तेलंगाना के अवाम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे कि ये नतीजा तेलंगाना की कामयाबी के लिए होगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए होगा, तेलंगाना की मजबूती के लिए। स्टेट इश्यूज पे कमेंट करें, नेशनल इश्यूज पे कमेंट करें। No. I am saying that the next government would not be formed without the regional parties. I have been saying this consistently from last 8-9 months. I still hold on to it, and I hope this is the requirement for our country, because a government of BJP with 280 seats has completely failed to live up to the expectations, to fulfill those promises. So now it is very important for a new India to be built, that regional parties play a very important role in providing governance in real terms, in providing development, in addressing issues of the youth, in addressing issues of security, in bringing peace and stability in Kashmir, in Northeast, in really addressing the farmers' issues. So I feel that the regional parties will definitely live up to these challenges and expectations of people. Most of the regional parties are with Mahagathbandhan. Are you going to campaign in I address this. Yes. Sir, thank you, sir. Consistently from last 8-9 months, I still hold on to it, and I hope this is the requirement for our country, because a government of BJP with 280 seats has completely failed to live up to the expectations, to fulfill those promises.
So now it is very important for a new India to be built that regional parties play a very important role in providing governance in real terms, in providing development, in addressing issues of the youth, in addressing issues of security, in bringing peace and stability in Kashmir, in Northeast, in really addressing the farmers' issue. So that I feel that the regional parties will definitely live up to these challenges, expectations of people. Most of the regional parties are with Mahagathbandhan. Are you going to campaign in other? I address Other than I address this. Yes. Sir, Thank you, sir, sir.